again of two types: low volume, low pressure, positive pressure ventilation, and high volume. Now, high frequency positive pressure ventilation is of three types. High frequency positive pressure ventilation, where the respiratory rate is adjusted between 60 to 120 per minute, and tidal volume is 3 to 5 mL per kilogram. Then we go to high frequency jet ventilation. There the frequency is 120 to 240 breaths per minute. And here we adjust the tidal volume 2 to 5 mL per kilogram. Then high frequency oscillation. There is 180 to 1200 breaths per minute, and tidal volume is 1 to 3 mL per kilogram body weight. But it's mostly in children or those patients who are in advanced ARDS. उनमें कभी कभी ये ट्राई किया जाता है, ये तीनों में से एक चॉइस लेते हैं, उनमें वेंटिलेटर्स में प्रोविजन होती है. Normally, high frequency positive pressure ventilation is considered when your respiratory rate is 4 times your basic respiratory rate. For example, if you are breathing 15 times, so you multiply with 4, it is 60. When you go beyond 60 breaths per minute, it is called high frequency positive pressure ventilation. As we went through last modes, there are two modes only: volume control mode and the pressure control mode. Whenever you start the ventilator, you choose one of the mode, but normally we choose the volume control first. Then from volume mode, we go to pressure mode, whatsoever is the indication, whether this patient needs volume control or pressure control. And in general, all the patients who have got brain insult, whether it is a brain tumor or head injury or CVA, we put them on a volume control, not on a pressure control, because it will affect the ICP. When we do the physiological and pathological effect of positive pressure ventilation, then I'll explain it in detail. Now, volume control, when you put the patient on volume control, you adjust the volume and your target is to have that desired volume, and how much pressure being generated by the ventilator is called peak inspiratory pressure. You keep an eye on that, because there is a limitation on up to what extent you can go into the peak inspiratory pressure. When you put on pressure control, you adjust the pressure, your target is the volume. You have already assessed this patient's volume should be such 6 to 7 ml per kilogram. Some people say 10 ml per kilogram. So you have got in your mind that this should be the volume, but how much pressure you have to adjust it. So you go on adjusting the pressure to have the desired volume. So you keep an eye on the volume. Then you get modulating type of modes. These are called modulating modes, or these are called weaning modes also. So there is quite a big choice depending on the pathology of the patient, depending on the severity of the disease of the lung. So you choose the mode. And always remember, when we put the patient on a ventilator, it's under our control. When we bring the patient back, it is under patient control. Patient comes automatically. If the patient is willing, we can wean it off. When the patient is not willing, we cannot wean it off. So weaning is a very long process. Sometimes it takes months also to wean the patient off the ventilator. So it's not a simple thing just to press the button and put the patient on ventilator and then you press the button and bring on spontaneous. It becomes difficult. These we did actually last time. So when we put the patient on a ventilator, so we choose the modes, and then we see whether there is any indication to intubate, whether there is any indication to ventilate, or whether there is any indication to extubate. And after that, you have there are some lot of logarithms, if you follow to that or not. But actually, the patient will tell you how to follow your ventilation also. Now, when we are putting the patient on a ventilator, the biochemical effect which we get out of it is, one thing is a ventilation and other thing oxygenation. When I use the word ventilation, you immediately think about the carbon dioxide. So oxygen is obvious, oxygenation is obvious, to keep an eye on oxygen. Oxygenation means how much oxygen you are giving, how much is the pressure in the alveoli, how much is the pressure in the plasma,
how much is the percentage of hemoglobin, and how much is the DO2, and how much is the VO2, and then you look at the lactate. That completes your oxygenation. The whole cascade goes like this. So if you only know the saturation of hemoglobin and you only know the PO2, you know very little about oxygenation. हमने तो ये देखना है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ने बल्क उठाया, उठा के लेगी, आगे डिलीवर भी किया कि नहीं. अगर डिलीवर कर दिया, उसको देखने के लिए वो यूटिलाइज भी कर रहा है कि नहीं. यूटिलाइज बिकॉज मेटाबॉलिज्म गोइंग ऑन एट माइटोकॉन्ड्रियल लेवल ऑल द टाइम. अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगी तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी. अगर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा. तो आप लैक्टेट विल टेल यू वेदर इट इज बीइंग यूज्ड और नॉट. सो वेंटिलेशन एस्पेक्ट, you adjust your minute volume, that is started volume into respiratory rate. Then there are ventilation is of two parts, alveolar ventilation and dead space ventilation. 1/3 is in the dead space, about 30.33 or 33%. And the rest of it, 66 or 67%, is going actually in the place of the respiratory system where the gas exchange takes place. That is, total generation of the lung is 23. And up to respiratory bronchial, it is 16. So our 16 onward, that is the respiratory units, where the exchange takes place, where the blood comes in contact with the gases, where diffusion takes place on either side. So we keep an eye on that. And according to John West, he has classified the lung into 3 zones: upper zone, middle zone, and lower zone. In upper zone, there is more ventilation than perfusion. There you will get dead space effect. In the middle zone, ventilation perfusion ratio, which should be 0.8, it's in the middle zone. In lower zone, you got more blood coming in than the air, than the gases. So that you will have a shunting effect over there. If I'm sitting like this, when I'm lying down, then the zones become like this. So that's the idea behind it when we put the patient on a prone position. So we change the zones. Those who were less ventilated, now they'll be more ventilated. Those who were having more shunting, now they will have less shunting. So in that changing the position, so it's not only the prone position very important, there are other positions also. You put the patient on lateral position also. But the best is prone because it's quite opposite to the supine position. So moreover, it will take the pressure away from, because it's a separate topic, patient ventilating a patient in a prone position. Then if you look at the ventilation in the context of ICU, increased carbon dioxide production, always keep in mind if the PCO2 is going up, there could be 2 reasons. Either it is not diffusing into the lung, or if it had diffused into the lung, it is not washing out. Because as you know, according to the laws of physics, the diffusion of gases at the alveolar level is like a diffusion in the liquid media. It follows a Henry's law of diffusion. Diffusion is in addition to pressure gradient, and diffusion of gases is directly proportional to its solubility coefficient. Carbon dioxide is about 24 times more diffusible in the liquid media as compared to oxygen. So it comes out very quickly. So then the pressure gradient is very low than relating in the blood. That will cause hypercarbia. Come to the nose or to the mouth. Its carbon dioxide is traveling in a gaseous media. Then it follows the Graham's law of diffusion. Diffusion of gases in a gaseous media is inversely proportional to its molecular weight, in addition to pressure gradient. किसी चीज के चलने के लिए, whether it is a gas or a liquid, you need to have a pressure gradient first. Then you have got physics laws which apply for its diffusion. So oxygen travels faster in the gas media because the molecular weight of oxygen is 32 and molecular weight of carbon dioxide is 44. It's inversely proportional. So carbon dioxide comes out very slowly. So patient has to breathe. If the patient cannot breathe, we'll have to breathe for the patient to bring the carbon dioxide out. Otherwise, there will be hypercarbia very quickly. Even if the patient, the respiration is depressed, you should give the oxygen through the nasal bronch or through the mask because it is diffusing all the time. It is diffusing faster than the carbon dioxide.
So you can correct the hypoxia, even giving oxygen to those patients who have got already depressed ventilation, right? So John West classification is very good and one should follow to it. So we used to do in Nishar also, I do in my also, we put on the prone position, lateral position like this. Now things which I tell you about the ventilation is the things which I do. People might differ from it. Everybody has got different approach. But our approach, my approach is purely 100% physiological. I go physiology of the patient, right? Because this is a subject I love. Now, oxygenation. The target of oxygenation is to build up the partial pressure of oxygen in the alveoli. P big 8O2. How can you build it? Oxygen travels by the concentration of oxygen which is going from the air. Air we have got 21% or 20.79%, something like that. And how much is the pressure? Because there are 2-3 things which you have to keep it separate. One is the percentage, other is the pressure, third is the combined. When we talk about oxygen, तो ऑक्सीजन वह जाती है कहाँ पे, ये कितने परसेंट जा रही है, इसका कितना प्रेशर बिल्टअप होता है और कितना कंबाइंड होता है. The combined tells you about the volume. Pressure tells you at what pressure the gases are going there. Saturation tells you that how much percent has been combined with the hemoglobin. So इन चीजों को अलग-अलग रखें, ठीक. तो big PaO2 is dependent on how much percentage of oxygen you are giving, under what pressure oxygen is going in, and when it goes into the alveoli, how much is the percentage of oxygen there and how much is the pressure of oxygen in the alveoli, P big AO2. Now, if you are given 21% or 20% and its pressure is 148 to 149, so partial pressure of oxygen in the air is about 148 or 149 millimeter mercury. Under this pressure, it is going to enter alveoli. When it reaches to the alveoli, its pressure becomes very less, about 100, 108 or 107 like this. Because the carbon dioxide is coming from the blood, it is diluting it. So that dilution causes reduction in the pressure in the alveoli. Now it is still greater. It has to be greater than the pressure in the blood. So due to pressure gradient and following the Henry's law of diffusion, then the oxygen goes into the blood. So this is oxygen, as I told you about the cascade of oxygen. Then we look at that how much is the pressure in the alveoli of oxygen and how much is the pressure in the blood. And if you take the difference, this is called AA gradient. The difference of pressure in the partial pressure of oxygen in the alveoli and partial pressure of oxygen in the arterial blood. So we look at, if this is increasing, it means there is a problem between alveolar capillary pathways. Alveolar capillary pathways, alveolar space, alveolar epithelium, then interstitial space, then capillary endothelium, then in the plasma, then passes through the RBC wall, then goes into that solution, and then it combines with the hemoglobin. Hemoglobin. So this is alveolar capillary pathway. So we have to look at, there is some problem. That we can sort it out. If that is a problem, we have to look at it. If the P big AO2 is normal or greater than normal, and it's and P small AO2 is very little, it's not going there, so we'll have to look in the pathway. उसके लिए फिर एक्सरे करते हैं या नाइट्रोजन वाश टेस्ट करते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन कैपेसिटी निकालते हैं. उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी का तो पता ना होगा. How many milliliter of oxygen are passing per minute per millimeter of partial pressure difference. So oxygen की जो diffusion capacity है तो वो 31 mil per millimeter of partial pressure difference. So that's quite good. Now, so you have to look at the distance. How much distance has been increased? The distance between the alveoli and the capillary is about 0.2 micron. 0.1 micron तो thickness है wall की alveoli की, 0.1 micron है उसकी capillary की thickness, ये total 0.2 micron बन. तो इसको कितनी जल्दी fast वो गुजरती है oxygen वहाँ से, right? Then in context of ICU, we'll have to look at why there is PaO2 is becoming bigger and PaO2 is smaller. You have to look at the patient position. You will have to look at the airway pressure.
then you will have to look at the parenchymal disease and so on, airway disease are likely to have to scrutinize it. Then there are two terminology which are used, because whenever we put the patient, we keep four things in our mind. One is barotrauma, other is volutrauma, third is biotrauma. Okay? Barotrauma means if you increase the pressure into the alveoli, which is called plateau pressure, pressure at the end of inspiration on the alveoli is called plateau pressure. That's very important thing to note. If the plateau pressure is greater than 30 centimeter water, so you should expect pneumothorax at any time. So very careful. PIP is a different thing, peak inspiratory pressure. Peak inspiratory pressure, you can go up to 45 also. But keep an eye on the plateau pressure. Your ventilators में provision होती है, you look at that. तो इस plateau pressure को सामने रखते हैं, उससे होता है आपका barotrauma. If the pressure is greater than that, then volutrauma, sometimes the alveoli distendable, they have got high compliance. Compliance is volume change per unit change in pressure. They're highly compliant, so it will stretch the alveoli, and through the pores, gases go out and cause pneumothorax. That is called volutrauma. It usually happens COPD patients. वह COPD patient में उसमें compliance बड़ी हुई होती है, ठीक है, उनके septa टूटे होते हैं दरमियान में, alveoli के दरमियान. So third is biotrauma. Biotrauma is, as I told you last lecture, there are 40 types of cells in the respiratory system. They are used to negative pressure breathing. Now we are giving positive pressure breathing. तो उनका behavior मुख्तलिफ हो जाएगा, मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ तरीके से react करेंगे उसको. तो इसलिए उसमें some types of solutions are released, sometimes some other hormones are released like this. So you are bound to have a biotrauma even if the patient's lung is normal, if you put them on a ventilator. ये तीन चीजें observe में. चौथी चीज है mechanical effect also, which is undone, because if you are not ventilating adequately, or if you are not ventilating with adequate pressure, or you are not ventilating with adequate volume of gas, so the alveoli starts closing. This is called atelectasis. उसको avoid करने के लिए we usually use the end expiratory positive pressure. उसको कहते हैं PEEP. If it is continuous, spontaneous breathing, that is called CPAP. Now the CPAP and from there it is derived is a BiPAP. So these are very helpful and useful things to use when you're ventilating a patient. But there are limitations to it also. And there are complications of this thing also. That one should keep in mind. ये नहीं होता अब ये रिवाज पड़ गया है कि BiPAP, कहते हम BiPAP पे पालो. BiPAP से हम patient को नुकसान हो. So there is specific indication also. Your CPAP is essentially constant PEEP, and BiPAP is CPAP plus pressure support. It means you keep the end expiratory pressure and you keep the pressure at which the gases are going in. So IPAP and EPAP, there are two components of BiPAP. IPAP, the pressure you are giving. Now for BiPAP, it's a must, the patient should be breathing. अगर patient ventilator पे उसको तो BiPAP पे डाल ही नहीं सकते. तो उसके लिए पहली चीज ये है कि patient should be breathing. If the patient is breathing, taking the breath in, you give the pressure support to increase the volume. It's purely for the inspiratory phase, right? So you get, that's called IPAP. And the pressure which we leave at the end of inspiration, that's called EPAP. EPAP, अब दोनों का मकसद मुख्तलिफ है. अगर टारगेट अगर किसी पेशेंट की कंप्लायंस ज्यादा है, उसके लिए आप जो IPAP बहुत ही थोड़ा देना पड़ता है, या ना दें IPAP, 0 पे रख लें उसको. EPAP को होता है to enhance the functional residual capacity. To enhance the functional residual, keep the alveoli open also, and to give longer time for the diffusion to take place. तो उसकी जो है ना closing volume का बढ़ा देते हैं. Closing volume क्या होती है? It is a volume above the residual volume at which the alveoli start closing. And that's a very important test for the expiratory lung disease. जैसे अस्थमा के लिए, COPD के लिए क्लोजिंग वॉल्यूम को पता लगना चाहिए कि क्या है. पता नहीं आजकल करते नहीं करते रूटीन में, आजकल तो कंप्यूटर आ गया ना. वैसे क्लोजिंग वॉल्यूम यूज्ड टू बी वेरी सेंसिटिव टेस्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज. नाउ
There are different indications also. This is a separate topic. I'm just going through it. Now, these are two terminology also, IMV and SIMV, intermittent mandatory ventilation. एक MMV भी होता है, mandatory minute ventilation. ये है intermittent minute ventilation or mandatory ventilation. Then SIMV is synchronized. Now, IMV is आप उसमें adjust कर देते हैं rate, patient ब्रीथ करने की कोशिश करता है, इट डजंट मैटर क्या वो एक्सपिरेटरी फेज में का कोशिश करते हैं या इंस्पिरेटरी में, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं. अगर मौका मिल गया तो वेंटिलेटर ने उसमें अपना सांस फेंकने की कोशिश करना, तो उसमें आपस में उनका कोऑपरेशन नहीं है. ऐसे में ये होता है कि इफ द पेशेंट स्टार्ट वांट्स टू ब्रीथ तो वेंटिलेटर रुक जाता है और फिर वो वेंटिलेटर अपना अंदर फेंक देता है, तो सांस ले लेता है. और फिर अगर उसने जब SMV को उसने खुद आना स्पॉन्टेनियस में, उस वक्त वेंटिलेटर रुक जाएगा, स्पॉन्टेनियस अंदर चला जाएगा. ये अपने प्यार मोहब्बत से करते हैं काम, SMV इसको कहते हैं. ये आप यूज करते होंगे वीनिंग मोड में. नाउ वेंटिलेटर सेटिंग यू टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन. अब देख रहे हैं आपकी ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं है, आपकी सैचुरेशन ठीक नहीं है या पार्शियल प्रेशर ठीक नहीं है, तो उसको आप कहते हैं कि हाउ टू एडजस्ट इट. तो उसमें दो चीजों को पहले देखा जाता है, FiO2 के व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यू आर गिविंग टू द पेशेंट एंड वेदर द पेशेंट इज हैविंग अ पीप और नॉट. इन दो चीजों को फिडल करते हैं आप. सिंपलेस्ट मैन्यूवर टू क्विकली इंक्रीज द PO2 इज यू इंक्रीज द FiO2. इट डजंट मीन कि आप FiO2 बढ़ा के चुप करके बैठ के लो जी अब तो सैचुरेशन बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचें कि मुझे FiO2 बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, what change has taken place in the lung, उसके बदले सोच के उसको हल करें. ये तो टेम्पररी मेजर to improve the oxygenation. Then always remember oxygen is a toxic gas. Now direct injury to the lung is by the percentage of oxygen you're giving to the patient. It has got no correlation with the partial pressure of oxygen, correlation with the percentage of oxygen. If you give more than 60% of oxygen, it will damage the lungs, particularly type 2 cells. It will directly hit the surfactant, production of surfactant, synthesis of surfactant. So इसको ज़हन में रखें, कभी ज़्यादा देर तक 60% से ऊपर ना रखें आप पेशेंट को. और फिर दूसरा फ्री रेडिकल स्कैवेंजर बनने शुरू हो जाते हैं, उससे वो डैमेज करते हैं उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और लंग. तो inadequate oxygen despite 100% FiO2 usually due to pulmonary shunting. ठीक है, अगर आपने 100% FiO2 दिया है फिर भी आपका लंग ब्लड में PaO2 नहीं बढ़ रहा, सैचुरेशन नहीं बढ़ रही, फिर आप सोचिए देयर इज शंटिंग गोइंग ऑन. बिकॉज शंटिंग को करेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. जैसे कोई कोलैप्स एटलेक्सिस हो गया या पस फिल्ड एलुलाइल आफ्टर निमोनिया, और वाटर और प्रोटीन्स है ड्यू टू ARDS, या उसमें प्योरली वाटर है ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और देयर इज ए ब्लड और ब्लीडिंग अंदर होनी शुरू होगी. यही काजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी परमिशन नहीं, वो उसमें भरा हुआ है एलुलाइन, ब्लड वैसे गुजर रहा है बगैर, तो गैस वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती. देयर इज इंटरफेस इन बिटवीन, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती. तो फिर वो ब्लड विच इज नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद गैस दैट कॉल्ड शंटिंग ब्लड, शंटेड ब्लड. सो उसको फिर देखें आप, उसको सॉर्ट आउट करें. पीप इंक्रीजेज, पहला तो एस्पेक्ट आपने कहा लिया FiO2 है. अब दूसरी चीज पर रखें लिखा कि आप उसकी पीप बढ़ाएं. पीप विल इंक्रीज द FRC, फंक्शनल रेजोल्यूट कैपेसिटी. पीप पे हमेशा देखें तो पीप शुड बी ऑप्टिमल पीप. ऑप्टिमल पीप का मतलब है कि कितनी पीप से आपका उससे आप रिजल्ट ले रहे हैं, वेदर दिस पीप इज अफेक्टिंग द अदर organs of the body or not, because PEEP enhances the positive pressure into the thorax in addition to positive pressure breathing effect. So that will decrease the venous return from the upper part of the body and from the lower part of the body. Transdiaphragmatic and transcervical pressure gradient बन जाता है. उसकी वजह से ऊपर से ब्लड नहीं ड्रेन होगा, it will increase the ICP. It is dangerous for those patients who have got brain insult. अगर नीचे से नहीं होगा, it will cause congestion of the liver, it will cause congestion of the gut, it will cause congestion of the kidney, right? Congestion का मतलब है arteriovenous pressure gradient कम हो जाता है. So perfusion in the unit time of the organ is reduced.
किडनी में आप डालें, खा किसी की नॉर्मल किडनी भी है, उसको वेंटिलेटर पे डाल लें, इमीडिएटली आप थिंक द पेशेंट हैव ऑरिजिनूरिया, बट वो जल्दी बड़ी कंपनसेट कर लेता है। लेकिन को जिसको पहले ही किडनी की प्रॉब्लम है उसको आप थोड़े से डायूरेटिक देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। एकदम मैं एग्जाम ले रहा था तो प्रोफेसर ब्रिगेडियर सलीम साहब का बेटा एक टेबल पे फंसाया हुआ था, बड़ा लायक लड़का, सलीम साहब का बेटा, आप जानते होंगे। हाँ, तो मैं उठ के गया क्योंकि उसने MCPS में टॉप किया था, पार्ट 1 में टॉप किया था, पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा था। और मैं देखा जाके तो प्रोफेसर कौर मरहूम और एक और से बैठे उनके साथ, तो उसको फंसाए बैठे हूँ। मैंने कहा क्या बात होगी, कहते ये किडनी के अंदर सवाल पूछते हैं। तो हमने कहा किडनी का एनेस्थीसिया के साथ क्या ताल्लुक है? मैं किडनी का एनेस्थीसिया उतना ही ताल्लुक है जैसा बीवी का खामद के साथ, हम इसके बगैर चल ही नहीं सकते। किडनी तो पहली चीज जिसको स्क्रूटिनाइज कर दें, वेदर गिविंग एनेस्थेटिक और वेदर यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट इन ICU में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी नहीं बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको किडनी पे निगाह रखनी पड़ती है। एंड यू पुट द पेशेंट ऑन अ पीप, इट विल एनहांस द पॉजिटिव प्रेशर, इट विल रिड्यूस venous return from the abdominal viscera, तो उनके आर्टीरियो वेनस कहते हैं, उसका EGFR जो कम हो जाता है। और इसी तरह बाकी ऑर्गन्स भी ऐसे होते हैं, उसकी कंजेशन हो जाती है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। लेकिन बाद वो इतनी पीप दे दें, किताबों में लिखा 5 to 20 तक जा सकते हैं, इतनी पीप दे दें कि इसमें स्पीरियड वेना के वहाँ में इतना प्रेशर हो जाता है कि लिम्फेटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। क्यों? एज़ाइगोस वेन एंड हेमीएज़ाइगोस वेन दे ड्रेन द लिम्फेटिक फ्रॉम द लंग, तो उससे ज़्यादा प्रेशर हो गया तो लिम्फेटिक ड्रेन नहीं कर सकेंगे, लिम्फेटिक ड्रेन नहीं कर सकेंगे, इट विल कॉज पल्मोनरी एडीमा, दैट्स पल्मोनरी एडीमा इज कॉल्ड रेजिस्टेंट पल्मोनरी एडीमा। जब किसी पेशेंट को आपने वेंटिलेटर पे डाला है और उसका लंग का जो अगर पल्मोनरी एडीमा में है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, always look at your positive pressure you giving to patient, always look at your PEEP, how much PEEP you are giving to the patient, उसका reduce करेंगे, आप देखेंगे pulmonary edema क्लियर होना शुरू हो जाता है। So you will have to keep the pressure in the superior vena cava less than the pressure in the azygos vein or hemiazygos vein, ताकि प्रेशर ग्रेडिंग हो से लिम्फेटिक्स उसको ड्रेन करती रहे, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमम पे उसके लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिमम पीप दें आप, जिससे आपने जो इस मकसद के लिए पीप पे डाला है आपका मकसद भी अचीव हो रहा है, लेकिन बाकी चीजों को उसने डिस्टर्ब नहीं किया। बैटरी डाउन, सो पीप का एक इफेक्ट ये होगा, अच्छा ये मेरे ख्याल आपका जो है ना लैपटॉप भी मेरी उम्र का ही है। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। चले, second thing which the PEEP does is it recruits the collapsed alveoli and improves the ventilation perfusion ratio. Normal ventilation perfusion ratio कितनी होती है? 0.8, क्योंकि alveolar ventilation divided by the total blood volume which is passing in 1 minute, अगर इसकी ratio निकाले 0.8, we want the 0.8 should be whole lung, 0.8 should be individual lung, 0.8 should be of individual lobe, 0.8 should be each alveoli. ये उसी सूरत है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्वुलाई, अगर उनको आप चादर की तरफ बिछा दें, चादर की तरफ बिछा दें उनको, वो कितना था 70 स्क्वायर मीटर। अगर इस कैपिलरी वॉल्स को भी चादर की तरफ बिछा दें वो भी 70 स्क्वायर मीटर है। तो अगर कैपिलरी वॉल बड़ी हो और एल्वुलर वॉल कम हो तो शंटिंग होगी, अगर एल्वुला बड़ी हो और कैपिलरी वॉल छोटी हो फिर उससे डेड स्पेस इफेक्ट होगा। क्यों जी, ठीक है। चल नहीं रहा, पहले अक्सर वही सब मुझे गालियां दे रहे थे यार, मैं सोने नहीं सका कुछ। 8%।
अब हुई है, हो गई, हाँ जी। ओके, आप लोगों को लैपटॉप के लिए एक इंजीनियर रखना पड़ेगा। Now, ventilator setting to improve the ventilation. Anything, respiratory rate. Right. Normally, at what respiratory rate we put them? 12 to 40. Ventilator पे डाल देते हैं पहले. So maximum rate you can reach is up to 35. ठीक है, जब 35 से ऊपर करना हो जाए फिर तो आप काम खराब हो जाएगा. इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज दोनों कम हो जाएंगे आप. Now, efficacy of ventilation decreases with increasing respiratory rate. ठीक है ना, वेंटिलेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. इंस्पिरेटरी फेज कम हो गया, ऑक्सीजन को इफेक्ट करेगी. एक्सपिरेटरी फेज कम हो गया तो वेंटिलेशन को इफेक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए. टाइडल वॉल्यूम स्टैंडर्ड गोल इज 10 ml per kilogram, but there is a risk of barotrauma and volutrauma with this also. अगर आप 10 ml पे दे दिए, हो सकता है वॉल्यूम इतनी ज्यादा हो, उसकी कंप्लायंस कम हो, उसमें प्लेटो प्रेशर बढ़ जाए, या एलुलाई इतने स्ट्रेच हो जाए जिसकी कंप्लायंस कम हो, तो वो वॉल्यूम ट्रॉमा करते हैं. इन दोनों को ज़हन में रखना चाहिए जब आप टाइडल वॉल्यूम को एडजस्ट करें. तो ऑप्टिमम टाइडल वॉल्यूम जो 6 to 7 ml पे डालते हैं, ARDS वाले को कम पे डालते हैं, और COPD वाले को भी हम पे डालते हैं, उनकी कंप्लायंस बहुत ज्यादा होती है. अदर मीन्स टू डिक्रीज द PaCO2, रिड्यूस मस्कुलर एक्टिविटी. ये हमेशा जब पेशेंट वेंटिलेटर पे डालते हैं, पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड, राइट. And if there are seizures, you undo the seizures also. Minimize the exogenous carbon dioxide load. Minimize करें. आप साथ 10% ग्लूकोज चला रहे हैं, 5% ग्लूकोज डालते हैं, वो सीधी जाके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो अगर आपका एडिक्वेट रेस्पिरेटरी रेट नहीं है या एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम ही नहीं है, बड़ी जल्दी हाइपरकार्मिया करता है. आप सोचते हैं कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड. पहले अपनी इन्फ्यूजन को देखें कि कितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. Then controlling hypermetabolic state. अगर hypermetabolic state है उसको कंट्रोल करें. ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म है पेशेंट को, फीवर है पेशेंट को, तो उस सारी चीजों को आप देखें. परमिसिव हाइपरकैपनिया हम खुद इंड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज आवर टारगेट इज ऑक्सीजनेशन, जैसे ARDS में होता है. परमिसिव हाइपरकैपनिया इज वन ऑफ द वे ऑफ ट्रीटिंग द ARDS आल्सो. ARDS अगर मैं करवाऊंगा उसमें, अगर जिंदा रहे और टाइम हुआ या आप लोगों ने बुलाया तो फिर करेंगे. इसको आज शुरू करना है मैंने वो. ओके, IE रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू इंक्रीज द ऑक्सीजनेशन, यू हैव टू इंक्रीज द इंस्पिरेटरी फेज. सम टाइम उसको रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन भी करते हैं. इट विल गिव लॉन्गर टाइम द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वोलाई टू द ब्लड. और इस रेशियो को आप बढ़ाते जाए उसके उल्ट हो जाए, देन उसको इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन, इनवर्स रेशियो IRV कहते हैं. PIP, एलिवेटेड PIP सजेस्ट, अगर आपने PIP बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इतनी देनी है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहे उसको कम ना हो, तो दैट इज इंडिकेशन स्विच ओवर फ्रॉम वॉल्यूम कंट्रोल टू प्रेशर कंट्रोल. या अंदर ही जब वेंटिलेटर कर देगा आपको, आप करते हैं. लेकिन जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपको अगर ब्रेन का है तो इंसल्ट हुई, उसके लिए आपने वेंटिलेटर पे डाला है, अब प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा है, आप समझते हैं कि आप इसको प्रेशर कंट्रोल पे डालना पड़ेगा. प्रेशर कंट्रोल डालने से जितना प्रेशर बढ़ेगा थॉरैक्स को, उसको अनडू करें बाय गिविंग ए ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उसका हेड को और ऊंचा करें. बहुत बार ये भी होता है, इफ देयर इज अ ब्रेन इंसल्ट, देन ब्रेन प्रॉब्लम, एंड एट द सेम टाइम पेशेंट हैज गॉट अ लंग प्रॉब्लम आल्सो. For lung problem, there is a strong indication to put the PEEP. Whenever you ventilating a patient for any intracranial surgery, we don't put them on PEEP until unless there is a pulmonary indication. अगर pulmonary indication बंद है, उसको undo करें, क्योंकि वो प्रेशर इफेक्ट ब्रेन के ICP को ना अफेक्ट करे. ठीक है, उसको उतना ही फिर ऊपर करते हैं. तो पहले तो 0 PEEP होना चाहिए, फिर PEEP को बढ़ाएं उसमें आहिस्ता आहिस्ता. Then plateau pressure, as I told you, the plateau pressure is very important. It is pressure measured at the end of inspiratory phase. It is the pressure at the alveoli. Pressure at the alveoli is nothing but it's a P big AO2 plus P NO2 N2 and PH2O and PCO2. सभी को इकट्ठा कर लेंगे, that is the pressure at the alveoli. ठीक है, प्रेशर एट द एल्वोलाई में उसको होगा जितना, उसको कहते हैं प्लेटो प्रेशर एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन. ये कभी भी
30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कह रहा है 30 से 30, लेकिन वो किताबों में लिखा हुआ तो लिख दिया हमने, लेकिन यह है कि कोशिश करेंगे 30 से ऊपर ना जाए, क्योंकि हमेशा जब इसको आप डालते हैं देखते हैं ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो ऑलवेज कीप एन आई पेशेंट के, वेंटिलेटर पेशेंट पे मेरे ख्याल में एक नर्स तो डेफिनेटली होती है, कॉन्स्टेंटली उसके इर्द गिर्द हो, और डॉक्टर भी विजिलेंट हो, उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर लगाना चाहिए, उसके पैरामीटर को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। बहुत सारी अननोटिस चीजें हो जाती हैं, particularly when you're dealing with a ventilator, sudden drop of saturation. आप राहत तो देंगे बढ़ाने के लिए, लेकिन always try to find the cause. There must be some cause. और लंग से शुरू हुए वेंटिलेटर तक आए आप पेशेंट को सिक्योरिटाइज करते हैं, लंग से लेके आगे उसके ट्यूब डाल ली है, और ये कैथेटर माउंट है, उस पर सर्किट है, उसका वेंटिलेटर को देखें। The first thing you do is do the ABG and send X-ray, do the X-ray of chest. तो इसको स्क्रूटनाइज करें फौरन, ऐसे इग्नोर ना करें। आप कहते नहीं मैंने वही बढ़ा दिया ना, ठीक हो गई, ठीक तो होगी, खराब क्यों हुई थी, उस पर निगाह रखें जरा। Now there are alternative modes, so इनको डिटेल में जाने की जरूरत है। I/E inverse ratio ventilation, prone position ventilation, ECMO, extracorporeal membrane oxygenator, airway pressure release, high frequency oscillation that I mentioned. तो लेकिन इन सब जो होते हैं अल्टरनेटिव मोड्स को, इसकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होनी चाहिए, और उसके बैड इफेक्ट को हमेशा देखेंगे, इसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। ECMO पे हमने डाला था ना एक पेशेंट को, ECMO is not easy. ECMO has got its own side effects also. We lost very important person. लेकिन that was not the cause only ECMO. लेकिन हमारी तो we were against it. मैं और कनीज we were deadly against it. That should not put on ECMO. तो ECMO में कार्डिक सर्जरी वहाँ डालते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ECMO पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो you have to have ड्रेनेज, ब्लीडिंग होनी चाहिए, ब्लीडिंग हुई ना फिर कितनी जबरदस्त उनको, ये ख्याल करना चाहिए, ECMO की नहीं लेना चाहिए। Now, the patient comes with a respiratory failure. What is the general management immediately you do? Incentive spirometry, mobilization of the patient, humidification with the air, then pain control, turn the patient around and cough and the deep breaths, which we routinely do it. Treatment में हम medication देते हैं, हम देते हैं bronchodilators and top up करते हैं with antibiotics also. ठीक है, फिर सोचें कि इसको CPAP की जरूरत है या BiPAP की जरूरत है, IPPV की जरूरत है, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग की जरूरत है, तो वो सारे करके देख लें। अब एंड में आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं गुजारा होता, इसको तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। फिर पहले देखें इज देयर एनी इंडिकेशन फॉर इंट्यूबेशन, ठीक, फिर उसके बाद देखें इज देयर एनी इंडिकेशन फॉर यू इंट्यूबेटेड, इज वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब आप पेशेंट को इमीडिएटली व्हेन यू पुट द पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वीनिंग। आजकल तो कहते हैं ज्यादा देर ना रखें आप, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वीनिंग, लेकिन मेरे ख्याल में इफ यू पुट द पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर एटलीस्ट 24 आवर्स तक आप कंप्लीट कंट्रोल करके वेंटिलेट करें, कंट्रोल करें। कंट्रोल का मतलब है उसको पैरालाइज करें, उसको हैवी सेडेशन दें, करें 24 आवर्स के बाद जो डिसीजन करना है वीनिंग स्टार्ट करें फिर करें। एक दफा आप उसको प्रॉपर 24 आवर कंट्रोल करें, उसके बाद वीनिंग या उसको अपने SIMV मोड में या खुद ब्रेथ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसको ब्रेथ दें। नाउ अब हम सोचते हैं कि क्या वेंटिलेटरी असिस्टेंस की पेशेंट को जरूरत है कि नहीं जरूरत। दीज आर द इंडिकेशन। वी लुक एट द PeCO2, we look at the dead space effect, we look at the oxygenation, we look at the mechanics of ventilation. ये सारे एस्पेक्ट देके we see whether the patient needs ventilatory assistance or not. PeCO2 normal is, I've written 30 to 40, but normal is 40, exact 40. Then ventilatory assistance is suggested when the PeCO2 starts going between 45 to 50 if there are other indications also. एक अकेली सोल पे नहीं करते. When it goes more than 55, that's the only sole indication for putting the patient on ventilator or giving the patient ventilatory assistance. Dead space, VD over VT ratio, normal is 0.3 to 0.4. It which goes between 0.5 to 0.6, we start thinking that patient will need ventilatory assistance. But if definitely more than 0.6,
then that's the only sole indication for giving ventilatory assistance. Then we come to oxygenation, whether you are oxygenating the patient with 21% oxygen or not. उसके बाद normally expected PO2 is 80 to 90, right? When it goes down to 50 to 60, we start thinking that patient should be put on, should be given assisted ventilation if there is other indication. Or if it is less than 50, definitely there is a sole indication to put the patient on a ventilatory assistance. If you're giving 100% oxygen, then the normal is 550 to 630. 1 to 5 की ratio होती है ना, 1 to 5 की ratio होती है FiO2 to PO2. Lekin when it comes down to 200 to 300, then you start thinking that it should be given ventilatory assistance. देखने में तो 200 बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन दे भी रखे हुए थे कितना दे रहे हैं आप, उससे आप कोरिलेट करें हमेशा. When it goes down to less than 200, that's a strong indication to put the patient on a ventilator or give ventilatory assistance. Then A gradient, normal air A gradient is 20 to 60. So when it goes to 350 to 450, so we start thinking the patient go on ventilator. And when it is greater than 450, that's a strong indication only to put the patient on ventilator. Then shunting effect, QS over QT. Shunt operation करनी आती है मैं तो आज से मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ सारे तरीके और खुद भी किया करें कंप्यूटर बाद जवाब दे जाते हैं ठीक है वरना आएगा जमाना जो कंप्यूटर जवाब दे जाएंगे नॉर्मल शंटिंग इज 3 to 8% और इसकी भी पता होना चाहिए व्हाट आर द नॉर्मल शंटिंग रूट्स व्हाई देयर इज नॉर्मल शंटिंग देन फिजियोलॉजिकल ventilatory assistant. When it is definitely greater than 40, that's a sole indication to put the patient on ventilator. Now we come to mechanics of ventilation. Respiratory rate, normal is 12 to 16. When it goes to 30 to 35, you start suspecting that it will go on the ventilator. When it is definitely more than 35, then the only indication to put them on ventilator. Because on 35 rate per minute, एक respiratory cycle को कितना लगेगा? पौने 2 मिनट कौन रहे हो इंस्पिरेशन भी एक्सपिरेशन भी होनी उसे देखिए एक तरह टाइम मिलेगा उसको वेरी लेस टाइम फॉर इंस्पिरेशन वेरी लेस टाइम फॉर एक्सपिरेशन तो इसलिए उसको वेंटिलेटर पे डालना टाइटल वॉल्यूम milliliter per kilogram 6 to 8 is normal 3.5 to 4 when it comes then you start suspecting that patient might need ventilation then if it is less than 3.5 then you should put on ventilator. Then vital capacity, normal is 50 to 60 mils per kilogram. When it goes down to 10 to 15, then start suspecting. When it is less than 10, this is a strong indication to put the patient on ventilator. ये आप इसको याद भी रखें जो आपका बना होना चाहिए फाइल में इसको लैमिनेट करके रखें इसको फॉलो करें ठीक है ना क्रिटिकल केयर में जो गाइडलाइंस जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो जिसकी भी हैं सारी मिलती जुलती होती है कई तरीके प्रेजेंटेशन करने के अपने आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें यहाँ पर अपना हर एक ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दे वहाँ खराबी हो जाती है फिर ये ना बढ़ गए now indication for intubation ठीक वो तो वेंटिलेशन का आ गया पहले आनी चाहिए how the values trend should significantly impact your clinical decision criteria clinical deterioration patient deteriorate हो रहा है respiratory failure का patient आ गया आपके पास उसके if the tachypnea rate is greater than 35 hypoxia is less than 60 hypercarbia is greater than 55 minute ventilation is less than 10 liter per minute, tidal volume is less than 5 to 10 mil per kilogram. So that is the indication to put the tube down. Tube डाल दें उसमें, ठीक? वही बात प्रेशर डिसाइड उसमें करें जो पहले मैंने इंडिकेशन दी है. Then negative pressure वो उसके जो strongly generate कर सकता है उसको भी देखना. It should be less than 25 centimeter of water. तब उसको tube डाल दें. Ventilate setting initially we put them on 50%. अक्सर देखा मैं लोग 100% में डाल के कर देते हैं वो भी ठीक नहीं है because never go beyond 60%.
हाँ, वो आपने फौरी तौर पे ऑक्सीजनेशन को बहाल करना होता है, वेंटिलेशन, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल यू कम बैक टू लेस देन 60, ठीक है। उसकी साथ साथ रीजन ढूंढते रहे। पीप नॉर्मली अगर कंट्रा इंडिकेशन नहीं, पुट देम ऑन 5 centimeter वाटर, रेस्पिरेट 12 to 15 breath per minute, tidal volume 10 to 12 ml per kilogram. It's a little bit greater. In case of COPD patient, you decrease it. In case of ARDS, you decrease it, right? So इसमें आगे फिर सोचें कि ARDS का इसमें परमिसिव हाइपरकार्बनिया की जरूरत है कि नहीं जरूरत, तो उसको देखें। तो ये फिर आगे जो डिटेल में करता हूँ उसको बताता हूँ। Now indication for extubation. अब आप देखते हैं कि पेशेंट वीन ऑफ हो रहा है, अब इसको खुद ही स्पॉन्टेनियसली ब्रेथ उसकी चल रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री ठीक है, ब्लड गैसेस ठीक है, अब आप उसको एक्सट्यूबेट करें कि ना करें, ठीक है, उसके लिए आपकी इंडिकेशन है। नो वीनिंग पैरामीटर कंप्लीटली एक्यूरेट व्हेन यूज्ड अलोन, ठीक है, सारे वीनिंग पैरामीटर ठीक होने चाहिए। क्लिनिकल पैरामीटर, रेजोल्यूशन और स्टेबलाइजेशन और डिजीज प्रोसेस, जो ओरिजिनल डिजीज थी क्या वो रिजॉल्व हो गई है, स्टेबल हो गई है। Hemodynamically patient is stable. Hemodynamics mean blood pressure is normal, systolic, diastolic and mean. Peripheral temperature is normal and mean artery pressure को देखिए उसको, ये normal है, और कैपिलरी refill time भी ठीक है, ठीक है, वो सारे को अलग है। आप if you are satisfied with this stable hemodynamics, intact cough and gag reflex, spontaneous respirations are normal. Acceptable ventilating setting, FiO2 less than 50%, PEEP is less than 8, PO2 greater than 75, pH greater than 7.25. अगर पेशेंट कंफर्टेबल आपकी ह्यूमन इस सेटिंग के साथ ठीक है, देन यू कैन एक्सट्यूबेट द पेशेंट, ठीक है। तो देखने में बात लगता है कि बहुत अभी भी 50% पे है। Whenever you are putting the patient, अगर आपके ब्लड कैसे ठीक भी होंगे, never ever lower the FiO2 लेस देन 40 कर देते हैं, 30 पे भी कर दिया, 20 पे भी कर दिया, 25 पे कर दिया, 21 पे करते हैं, उसका प्ले करते हैं, उनको 40 पे ही रखें, 40 पे करें। बाद में आप जब मास्क देंगे कि कौन सा मास्क आप दे रहे हैं, किस मास्क दे रहे हैं, फिक्स्ड हैं जो वेरिएबल मास्क हैं, जो आपको पता है वो क्लासिफिकेशन जो मास्क की है, तो उस लिहाज से आप वेंचुरी से दे रहे हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से फिर आप उसके FiO2 को आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। जनरल अप्रोचेस, ऐसे वीनिंग नॉर्मली करते हैं, लेकिन प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे वीनिंग करते हैं, तो उसके बाद बाईपैप वगैरह पे ले आते हैं, जो भी आपकी रूटीन है उस लिहाज से आप वीनिंग प्रोसेस काफ़ी लंबे चौड़े हैं उसकी। तो फिर या स्पॉन्टेनियस SBT किया, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल कर लिया, उनको उस पर आप पॉजिटिव रिजल्ट है, देन यू आर सेटिस्फाइड, देन यू कैन एक्सट्यूबेट द पेशेंट। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल्स ये करते होंगे ना वेंटिलेटर पे, हाँ ये जरूर करें, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। PEEP 5 की, प्रेशर सपोर्ट 0 to 5, FiO2 less than 40, breathe independently for 30 to 120 minutes, ABG obtained at the end of spontaneous breathing trial. Failed SBT उसको कहते हैं, if respiratory greater than 35 for greater than 5 minutes, saturation is less than 90 for greater than 30 seconds, then heart rate is greater than 140, systolic blood pressure greater than 180 or less than 90 millimeter mercury, sustained increased work of breathing, cardiac dysrhythmia start हो जाए, pH less than 7.32, ये सारे क्राइटेरिया को मेरे पास है, तो हैंड आउट कॉपी कर लें, लेकिन उसमें कोई चेंजेस की है मैंने, तो क्या फोटो कैंसिल आप करा देंगे इस तरह, तो पिछले दो मैंने दिए थे डॉक्टर को, उसकी हाँ कॉपी कर लें उसमें। ये जो है ना बहुत किताबों में थोड़ी वेरिएबल होंगी, तो आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग, आई डोंट थिंक आई एम 100% राइट, लेकिन द वे आई प्रैक्टिस इट ये उस लिहाज से मैंने लिखी हुई है और मेरे पास रीजन है इसकी, ठीक है। यार risk of intubation balanced against the continued need for intubation, ठीक है, ये कोई ऐसी कंडीशन है जब उसमें हम इंट्यूबेशन रखते ही हैं उसमें, लाइक altered mental state and inability to practice, ठीक है,
ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट अभी भी ऑल्टर्ड हो, का ब्रीज ठीक कर रहा हो, ब्लड कैसे ठीक हो, हीमोडायनामिक ठीक हो, तब भी आप पेशेंट को ट्यूब नहीं निकालते, क्योंकि किसी टाइम भी उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता। पोटेंशियली डिफिकल्ट री इंट्यूबेशन, आप ये ना हो कि ये निकाल दी बॉल में डले ही ना, वो आपको पहले हिस्ट्री से पता लग जाएगा जब डाली थी कितनी प्रॉब्लम थी, ठीक है। देन अनस्टेबल इंजरी टू सर्वाइकल स्पाइन्स, सर्वाइकल स्पाइन वाले आपको पता ही है कि कितना केयरफुल हो के आप उसको ट्यूब डालते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली आप जब ट्यूब डालते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, क्या होती है? तो 3 लाइनें कौन कौन सी हैं? आपने मुंह को या नाक को लेरिंग्स के साथ, लेरिंग्स ने ट्रेकिया के साथ एक लाइन में लाना है, ठीक। आप इसको आप देखें, अगर कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, सर्वाइकल फॉरवर्ड, थोरेसिक बैकवर्ड, लंबर फॉरवर्ड एंड नीचे फिर बैकवर्ड इस होता है। तो आप इस आपका देखें ना ऐसे जा रहा है सर्वाइकल, तो इसके ऊपर से ऐसे ट्रेकिया जा रहा है। हो सकता है आप ट्यूब आप लेरिंग्स में गुजार लें, आगे जाके अड़ गए हमसे। इसको अंडू करने के लिए यू पुट वन पिलो अंडर द ऑक्सीपुट, ये इसको स्ट्रेट कर दे, ठीक है। अक्सर वही कराची से, तो कोई ये मेरे पे आएगा, नहीं पता नहीं किसका अभी और कोई। इससे एक होगी। दूसरा, आपने अब मुंह को और लेरिंग्स को एक लाइन में डालना, उसके डालने के लिए जो एक्सटेंड द हेड एट लेंथ टू ऑक्सीपिटल जॉइंट, उसको ऐसे करें। मुंह भी, लेरिंग्स भी और ट्रेकिया एक लाइन में आ गया। नाउ इट विल बी इजियर टू इंट्यूबेट। मोस्टली मैंने देखा है, आज तक मैंने 50-60 साल से एनेस्थीसिया भी दे रहा हूँ, अक्सर मुझे बुलाते कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, या तो पेशेंट की पोजीशन ठीक नहीं होती थी या डालने वाले की पोजीशन ठीक नहीं होती थी। पहले पेशेंट की पोजीशन ठीक करो, फिर अपनी पोजीशन ठीक करो, बैठ के इंट्यूबेट करो। मैं तो अपनी लाइफ इसके लेवल पे उसको हेड लाता हूँ, फिर मैं डालता हूँ, वो मेरी अपनी आदत है। उस पर आप ऐसी बनाए जो उससे आप कंफर्टेबल होकर ट्यूब डाल सके। सो पुट वन पिलो अंडर द ऑक्सीपिट, then rotate that on it, then all 3 points will be in one line, then it will be very easy to intubate the patient. तो पहले जिसमें डिफिकल्टी हुई है, आप उसको फिर ख्याल करें जब एक्सट्यूबेट करना हो कि सारी चीजें आपके पास हों, तो फिर आप हौसला करें, ठीक है, फिर डाल दें। पीछे एक बंदा खड़ा होना चाहिए, राइट। देन लाइकलीहुड ऑफ रिटर्न ट्रिप टू ओवर ऑपरेशन रूम, हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद उसको फिर, या एक दिन के बाद फिर उसको आप थिएटर में लेके जाना है, फिर व्हाई नॉट टू कीप द ट्यूब देयर, क्या प्रॉब्लम है? नीड फॉर फ्रीक्वेंट सक्शन, जिस पेशेंट को बार बार सक्शन की जरूरत पड़े, द बेस्ट वे इज टू कीप द ट्यूब इन एंड यू कैन सक इट आउट। सक्शन के भी अपने तरीके, सक्शन इज इटसेल्फ होल टॉपिक। हाउ वुड यू सक द पेशेंट, हाउ वुड यू सक द पेशेंट इफ देयर इज सिक्रीशन, ठीक है। इसको भी जरा और बड़ी साइंटिफिक तरीके से देखिए क्या क्या इस्तेमाल करना उसके लिए। इसको मैं ख्याल में स्किप ही करता हूँ ये आपका। हाँ जी, आगे चलें। नहीं, मैं अगले पे जाना, अभी टाइम है ना, है? मैं स्टार्ट कर देता हूँ, रेस्पिरेटरी फेलियर को स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आगे ये वाला लंग। Now, what is respiratory failure? Anybody? What is the definition of respiratory failure? Dr. Aisha, पीछे छुपी। What is respiratory failure? इसलिए तो मैं कहता हूँ पल्मोनोलॉजिस्ट को क्रिटिकल केयर का फिजिशियन नहीं होना चाहिए। उनको वो चीज़ें नहीं समझ आएगी जो हम एज ए सामने इस प्रोसेस से गुजरते हैं। सारी हमारी फेलोशिप जो है ना एनेस्थीसिया की, इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर और पेन, तीनों हैं।
यहाँ से ऑर्थोपेडिक सर्जन गए थे वो देने के लिए पेन का, पार्ट 2 में बहुत बुरी तरह फेल हुए। Pulmonary system is no longer able to meet the metabolic demands of the body. This is respiratory failure. ठीक है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी को फुलफिल कर सके। क्या होती है मेटाबॉलिक डिमांड्स? ऑक्सीजन और सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन देनी होती है, वो लेके सेल तक पहुंचानी है उसमें आप। ठीक है, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अनेबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सके और ऑक्सीजन वहां तक ना पहुंचा सके, इट मींस द पेशेंट इज रेस्पिरेटरी फेलियर। आपको पिछली दफा बताया देयर आर 6 लॉज ऑफ गैसेस which applies to patient in intensive care unit when we are dealing with a ventilator patient. Grimes law of diffusion, diffusion in a gaseous medium. Henry's law of diffusion, diffusion in a liquid medium. Dalton's law of partial pressure, when we count the PiO2, PaO2, Pa small aO2, ये सारी चीजें जो करते हैं PN2 और सारे जो निकालते हैं वो Dalton's law of partial pressure. Then Hagen-Poisson law, flow through the tube. Flow in a parallel line, flow through tube. ठीक है, तो उसमें क्या flow is directly proportional to the pressure gradient. When you use the word pressure gradient, it includes the length automatically. If you use the word pressure difference, और एक एंड से दूसरा जो प्रेशर डिफरेंस है उसको कहेंगे प्रेशर डिफरेंस, फिर लेंथ स्टार्ट करनी पड़ी। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर difference, inversely proportional to the length of the tube. तो इसके आप प्रेशर ग्रेडियंट का लफ्ज करते हैं, इसमें लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड इट्स आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द, विस्कोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है ना, इससे आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं, इससे फ्लो भी निकाल सकते हैं, इससे रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू कंबाइन विद ओम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ओम्स लॉ का अप्लाई होता है एल्वोलाई पे भी, ओम्स लॉ अप्लाई होता है ब्लैडर पे भी। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई होता है वेंट्रिकल्स पे भी हार्ट, और ओम्स लॉ अप्लाई होता है गट पे भी, और वेसल में भी अपना अप्लाई होता है। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी एक्सप्लेन थोड़ी सी डिफरेंट है। Then Laplace law, P is equal to 2T over R, ये भी उस पर प्रेशर के साथ अप्लाई होता है। ये आप 6 लॉज आपको एज ए एनेस्थेटिस्ट और जो फेलोशिप कर रहे हैं आपको आना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। Now getting oxygen, objective is increase a P big AO2, बंद कर दो है? अच्छा मैं थक गए आप लोग। Our objective is when we are giving oxygen or gases to the patient is to build up the partial pressure of oxygen in the alveoli, वहां तक पहुंचाना है। आगे तो डिवीजन लिक्विड है, उसका वेंटिलेशन के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, वेंटिलेशन इतना ही ताल्लुक है कि वो प्रेशर को बिल्ड अप करे, because pressure at the alveoli is PaO2 plus PaCO2 plus PaH2O plus PaN2, ये सारी ऑक्सीजन का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, वाटर वेपर का प्रेशर और नाइट्रोजन का प्रेशर, सारे को इकट्ठा करें एल्वुलाई में जो पड़ता है ना उसको, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एट द एल्वुलाई, पार्शियल प्रेशर एट द एल्वुलाई। फिर इंडिविजुअल को आप निकाल लेते हैं परसेंटेज के लिहाज से। ठीक है, यहाँ हमारे ऊपर कितना प्रेशर है? 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, इसमें वाटर वेपर कितना है? 47, नॉर्मली 47 एट सी लेवल। आप देखें 47 निकालते हैं, बाकी गैसेज का कितना रह गया? 713, उसे 21% ऑक्सीजन है। 730 ज़रबे 21/100, 148 149 तक इतना की बात रहेगा। ठीक है ना, दैट इज PiO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना, हाँ इसी तरह एल्वुलाई भी निकालते हैं करके। नाउ PaO2 इज अफेक्टेड बाय pressure in the alveoli itself. Second, PaCO2, which is dependent on the respiratory rate and depending on the tidal volume, and also depend on volume pressure response curve, which is compliance का होता है curve, volume pressure is the volume change per unit change in pressure. Compliance को आप जो वेंटिलेट कर रहे हो उसमें देखा करें, आप प्रेशर कंट्रोल में दिया ना, अगर आप 15 पे दे रहे हैं
वेंटिलेटर 16 कर दें, फिर देखें टाइटल वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ा। दैट इज कंप्लायंस। अच्छा वेंटिलेटर तो खुद भी बताता रहता है, वेंटिलेटर को चेक करने के लिए आप खुद भी करके देख लिया करें, ठीक है। इन 2-3 चीजों पे आप ख्याल रखा करें कि इसकी कंप्लायंस कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है, और उसके बाद देखिए इंड्यूस स्पीड भी देखा करें, अपने वेंटिलेटर में जाके इंड्यूस स्पीड भी देखा करें। अगर इंड्यूस स्पीड बिल्ट अप होनी शुरू हो गई देन यू इंक्रीज एक्सपिरेटरी फेज अपोजिट। हाँ, तो ये जो वेंटिलेशन है आदमी को वेंटिलेटर और पेशेंट के ऊपर ही आती है, तो आप वो तो पढ़ लेते हैं करके, लेकिन उसको प्रैक्टिस करेंगे आपको, इट विल बी लास्टिंग योर माइंड फॉर लॉन्गर टाइम, करते रहें इसको। तो वेंटिलेशन पे खास तौर पे जब इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन में डालते हैं PaO2 बड़ी जल्दी बिल्टअप होता है, ठीक है। गेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज चेंजेस इन द PaCO2, रेस्पिरेटरी रेट पे डिपेंड करती है, टार्गेट वैल्यू पे डिपेंड करती है, वेंटिलेशन प्रोफिशिएंसी मैचिंग पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है आप देखेंगे अगर PaCO2 बिल्टअप होनी शुरू होगी है ब्लड में, इसका मतलब PaCO2 एल्वेलाई में बिल्ट हो गई है। क्यों बिल्टअप हो गई है उसका देखें, रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं छोटा थोड़ा, टाइटल वॉल्यूम तो नहीं थोड़ी, इसको चेंज करें। और फिर उसके बाद देखें वेंटिलेशन परफ्यूजन, अगर आपने वेंटिलेशन ठीक कर रहे हैं तो परफ्यूजन में हार्ट आता है ना, हीमोडायनामिक्स देखते हैं आप, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, मीन आर्टरी प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, सारे तीनों को देख के आप फिर देखें तो इसकी मिसमैचिंग तो नहीं हो रही, आपका आंसर जरूर मिल जाएगा, उसी वक्त ही मिल जाएगा आपको, अगर आप इसको हर चीज को पैरामीटर को ऐसा ऐसा स्क्रूटनाइज करते हैं। मैं ख्याल यही टोकता हूँ, अगली दफा हम पूरा ARDS कर लेंगे, तो जब जाएंगे मैं आ जाऊँ। 2 हफ्ते के बाद ही, तो 1 हफ्ता क्या करते हैं आप लोग। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो पूछें। 1 हफ्ते में